Hello and namaskar to all the students. I welcome you all on my YouTube channel, that is Bhumi's Physics Tutorial. So we have started with the unit 1, that is units and measurement. Today we are going to discuss another subtopic of unit 1 and the important topic, that is estimation of error. Or you can also say that these are the ways of expressing the error. So there are three ways of expressing the error. We will see them one by one. So let's start. So basically we know that whenever we are taking measurement of any physical quantity, yes, the errors are present in it. कोई भी हम रीडिंग लेते हैं तो दैट इज़ नॉट एक्यूरेट, प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो उसमें एरर जो है वो प्रेजेंट होता ही है. So the error in the measurement, it may be represented by the actual amount of error, कितना error present है, or by a ratio comparing the error to the size of the measurement. So जो भी error है, we can express that in two ways. पहला जो है, that is कितने amount में actually error present है, in that way we can express it. Otherwise we can express that by a ratio. और जब हम रेशो में एस्टिमेट करते हैं एरर, एट दैट टाइम वी कंपेयर द एरर टू द actual size of the measurement. Okay, so these are the two possibilities in that we can express the error. Now in that first error is the absolute error. Now what is the absolute error? So ये जो absolute error है, it shows how large the error actually is. Absolute error, it do not always give an indication of how important the error may be. For example, if we are measuring a football field and the absolute error is of only 1 centimeter, then the error is virtually irrelevant. But if you are measuring a small machine part where its size is less than 3 centimeter, then an absolute error of 1 centimeter is very significant. So it depends कि आप क्या मेजर कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो एरर है वो रिलेवेंट है और इररिलेवेंट है. ओके, सो ये जो दोनों सिचुएशंस है उसमें एब्सोल्यूट एरर 1 सेंटीमीटर का ही है, बट दोनों सिचुएशंस अलग अलग है. सो हियर द रिलेवेंस ऑफ द एरर इज़ वेरी डिफरेंट. समझ में आ गया? एंड दैट इज़ वाई एब्सोल्यूट एरर जो है वो ज़्यादा अनसर्टन है टू एक्सप्रेस. नाउ कंसिडर करो कि यू आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट and it has been told to you that take 5 measurements for the experiment. Now suppose the values which you have obtained for the measurements are A1, A2, A3, A4 and A5. Now up till n readings also you can take. So मान लो कि your last reading is AN. Then the arithmetic mean of all the values that can be taken as best possible value of the quantity. Now why we calculate the arithmetic mean over here? Because we don't know the actual value. हमें real value पता ही नहीं है, and that is why we are taking the mean of all the observations, because that can be considered as the best possible value. ओके, आपने 5 रीडिंग्स लिए. फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ द रॉड,
आपको एक्चुअली पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड. सो फॉर दैट यू हैव टेकन 5 डिफरेंट रीडिंग्स फॉर दैट. सो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सा होगा? व्हेन यू विल टेक समेशन ऑफ ऑल द रीडिंग्स और ऑल द मेजरमेंट्स विच यू हैव टेकन. तो ये एब्सोल्यूट एरर यही बोलता है कि इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between the individual measurement and true, or you can call it as the actual or the accepted value of the quantity. That is the absolute error of measurement. Okay, so arithmetic mean हम कब निकालेंगे? when we don't know the actual value. और अगर आपको true value पता है, actual value पता है, तो you can just find it out just by subtracting. Okay, like if you know the individual measurement of the rod as 5 centimeter and the true value of the rod is 5.5 centimeter. Okay, so take the difference is of 0.5 centimeter. Yeah, so that is the error, absolute error which is present in the measurement. और जब ट्रू वैल्यू आपको पता नहीं है, देन यू विल टेक द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. एंड वो कैसे लेते हैं? दैट इज जस्ट द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस यू हैव टेकन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, नाउ here in this case, if you don't know the true value, then you can find the absolute error for each individual measurement which you have noted. Now for the first measurement, it has been told to you find the absolute error. Then delta a1 is equal to a1 minus a mean. Here delta a1, it represents the absolute error of first measurement. Okay, which is equal to your individual measurement a1 minus a mean. Now similarly you can find out the absolute error for the second measurement, that is delta a2 is equal to a2 minus a min, and so on. You can find out the absolute error for the nth observation as delta an is equal to an minus a mean. So यहाँ पे जो delta a है, that is the difference, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट इट्स द मॉड ऑफ योर एब्सोल्यूट एरर. ओके, एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव. दो आपका आंसर नेगेटिव भी आ गया तो आपको वो पॉजिटिव ही कंसिडर करना है बिकॉज इट्स द मॉड. ओके, नाउ अगर आपको पूछा कि व्हाट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो हमको मीन कैसे निकालते हैं पता है. एब्सोल्यूट एरर ऑलरेडी वी हैव फाइंड इट आउट, तो इसका मीन निकालना है तो दैट विल बी मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दैट विल बी डेल्टा ए मीन which is equal to delta a1 plus delta a2 plus delta a3 up to so on delta an upon n. ओके, सो ये जो एब्सोल्यूट एरर है वो एग्जैक्टली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज इट डजंट गिव अस एन एग्जैक्ट आइडिया कि कितने वैल्यू क्लोज है और कितनी फार है. ओके, लाइक वी हैव सीन द टू सिचुएशंस. ओके, सो इससे बेहतर जो है दैट इज द रिलेटिव एरर. Q, why it is more significant than the absolute error? Because the relative error of the measurement, it shows how large the error is in relation to the correct value. Got the point? Relative error of the measurement shows how large the error in relation to the correct value. Therefore, the relative error can be expressed as the relative size of the error. It gives us the relative size of the error. कितने से ज़्यादा है कितना कम है. It gives us exactly size of the error of the measurement in relation
to the measurement itself. So relative error is equal to mod of measured value minus actual value to the divide by the actual वैल्यू. सो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है. कंपैरिजन हो रहा है इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली एक्चुअल वैल्यू से हम मेजर्ड वैल्यू को रिलेट कर पा सकते हैं. एम आई राइट? एंड देयरफॉर रिलेटिव एरर जो है वो ज़्यादा बेहतर है दैन दी एब्सोल्यूट एरर. हम रिलेटिव एरर को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बिकॉज मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू इज डेल्टा ए मीन विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, सो द रिलेटिव एरर can be also expressed as the ratio of mean absolute error delta a mean to the mean value a mean of the measured quantity. Therefore relative error is equal to delta a mean upon a mean. Now ये जो relative error है उसको अगर हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है तो that gives us the percentage error. Therefore, the percentage error is equal to relative error into 100%. And relative error का formula तो हमें already पता है, which is delta A min upon A min into 100%. So these are the three ways in which we can express the errors. And कोई भी आप measurement करो उसमें error तो present होगा ही होगा. So these are the three ways which we can use to express or to estimate the error. Next, we will talk about the significant figures.